the next thing that we talk about is that when it comes to reforms that the budget has seen in the last few years, ये important है, ये तुम्हारे मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, चूँकि सर्वे ने पूरा एक बॉक्स बना दिया इस पर, तो मेंस में सवाल पूछ सकते हैं, तभी मैंने तुम्हें एक डिटेल्ड सा आंसर दे दिया है यहाँ। पहला, improved fiscal transparency and realistic revenue assumption in the budget। ऐसा कैसे हो रहा है? Improved fiscal transparency and realistic revenue assumptions in the budget। समझना ये बात, improved fiscal transparency here means reducing off budget expenditure, reducing off budget expenditure। ये एक जरूरी चीज की हमने, that we have reduced the off budget expenditure। 2019-20 the total loan outstanding of Government of India to Food Corporation of India was more than 2 lakh crore rupees। Thankfully, the Government of India accommodated that extra loan in the budget of 2021, paid it back to Food Corporation of India, settled it। Similarly, total loan outstanding of Air India was 52,000 crore rupees। Thankfully, in the budget of 21-22, entire outstanding loan settled it। ये अच्छे शुरुआत है। सरकार नहीं तो पहले क्या करती थी, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा ना दिखे इसीलिए बजट के बाहर बोरो कर लेते थे। कहाँ से बोरो करते थे? पब्लिक सेक्टर के थ्रू, उनके ड्यूज रहने देते थे। सो नाउ द गुड थिंग इज देयर इज नो पब्लिक सेक्टर ड्यू on loans, government has paid it back all। That is one idea of improved fiscal transparency। छिप के लोन नहीं लेते हैं। Then realistic revenue assumptions in the budget, that is overestimation is not done। पहले क्या हो जाता था, ग्रोथ ओवर एस्टिमेट कर लेते थे, रेवेन्यू ओवर एस्टिमेट कर लेते थे, वो अब नहीं होता। Overestimation is not done। Now we don't overestimate our revenue expenditure, which means that we don't overestimate our deficit, underestimate our deficit। अगर आप अपने रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, उसे ओवर एस्टिमेट कर लोगे तो जो डेफिसिट है अंडर एस्टिमेट करेंगे और साल के अंत में झटका लगेगा। Thankfully, we have learnt our lessons। We don't overestimate our revenue, which in fact last year we underestimated our revenue by almost 4 lakh crore rupees। So that extra money came, and that extra 4 lakh crore was very helpful in meeting the requirement of food subsidy that was needed extra, fertilizer subsidy that was needed extra। So that ways we have done comparatively better। And then, so this is one benefit। Then discontinuation of plan and non-plan expenditure। You know, discontinuation of plan and non-plan expenditure। ये 2018 के 17-18 के बजट के साथ हमने शुरू किया कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्कशन खत्म करें। क्यों? प्लानिंग ही खत्म हो गई थी। 5-year plans were not there anymore, so no need to distinguish between plan and non-plan expenditure। एक thought process क्या था? Plan expenditure is important because it is for development purpose। Non-plan expenditure is not important, it is not for development purpose। तो सरकार क्या करते थे? प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा करते थे, नॉन प्लान कम। तो स्कूल की बिल्डिंग बन गई, स्टेशनरी का पैसा दिया ही नहीं। क्या फायदा है स्कूल की बिल्डिंग बना के? फिर ये दिक्कत थी हमारे प्लान और नॉन प्लान के डिस्टिंक्शन की। आपने बिजली का खंबा लगा दिया और बिजली का तार के पैसे या रिपेयर के पैसे, मेंटेनेंस के पैसे देना ही भूल गए। तो प्लान और नॉन प्लान का ये परेशानी थी। सरकार ने बोला वी विल नॉट डू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रादर वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता रहेगा ये खर्चा है कैपिटल पे, एक प्रोडक्ट बनाने पे, और ये खर्चा है फिर उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स मीट करने पे। There is one thing needed to establish a project, and then more and more expenditure needed to run the project। तो capital expenditure, revenue expenditure, इसके बीच का distinction किया गया। So plan and non-plan expenditure has been replaced by capital expenditure and revenue expenditure। Plan and non-plan expenditure has been replaced by capital expenditure and revenue expenditure। And then it has, so that has helped in effective planning
and better allocation. You know why better allocation? Now there is allocation for capital expenditure, बिल्डिंग बनाए स्कूल के, और वहीं पता चल गया कि अगर स्कूल की बिल्डिंग बनी है तो फिर उससे रिलेटेड सैलरी का खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा, तो रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा डाल दिए. So there is allocation for capital expenditure and related revenue expenditure. So that is why effective planning and better allocation of resources. That is what was being there. Now see, when we talk about the factors, we say that third thing that we did was merger of railway budget with union budget. Why? It gave holistic picture. Why holistic picture? Now railway and steel and coal and textile, all ministries budget could be brought together. जो रेलवे के इनपुट सप्लायर्स थे, जो रेलवे के आउटपुट यूजर्स थे, सब इकट्ठा होकर बजटिंग होती फाइनेंशियल फिस्कल मार्केट में. दैट वाज अ गुड थिंग टू डू. सो दैट वाज वन थिंग डन by merging rail budget with union budget. Then multimodal transport planning could be facilitated. Earlier rail budget used to be separate, so railway minister would come and announce their own plans for new rail routes, new rail lines. Now that has gone. Now it is railway, airway, waterway and say roadways. और ये चारों जो रास्ते हैं multimodal transport, उनकी interconnectivity तुम सोच के देखो. जैसे हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया, लुधियाना टू प्रयागराज रेलवेज, प्रयागराज टू बनारस रोडवेज, बनारस टू हल्दिया वाटरवेज. यू सी दैट, एंड द एंटायर जोन कनेक्टेड बाय एयरवेज. तो मल्टीपल फ्रेमवर्क बनाए जिससे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ वेज मिलती हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ facilitating multimodal transport planning that has been enhanced. And efficiency of resource allocation. कैसे? Railway is not required to pay dividend to central government. पहले क्या होता था? Railway would pay dividend to central government and then railway would get budgetary support from central government. इस हाथ से दे के इस हाथ से ले लो. फायदा नहीं. रेलवे सरकार की कंपनी है, लॉस में चलती है, डिविडेंड कहां से देंगे? पर डिविडेंड खींचा जाता था उनसे पहले. तो अब रेलवे का रूल क्या हुआ? दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव देम बजटरी सपोर्ट. और उससे एक और फायदा हुआ है इस इनहैंस्ड एफिशिएंसी एलोकेशन में, इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे. मैं तुम्हें एक डेटा देता हूं. इन 2017 व्हेन रेलवे बजट वाज नॉट मर्ज्ड, the capital expenditure on railway was only 39,000 crore, and from there today the capital expenditure on railway is 2,40,000 crore. So within 5-6 years capital expenditure on railway has increased almost six and a half times. You know, so that is a big increase that we see. And why is capital expenditure in railways important? Safety projects, technological enhancement, making sure there is electrical transportation, making sure there is electronic signaling. ये सारा capital enhancement of railways हैं. तो ये चीजें हमें मदद कर रही हैं कि रेलवे की हालत थोड़ी सुधर रही है उसके वजह से. और एक और काम सरकार ने क्या किया? They shifted the date of budget presentation. They shifted the date of budget presentation from 1st March to 1st February. Again a very good decision. Why a very good decision? Because 1st March used to mean that the budget will be passed by April, and then the distribution would take place by May, and then monsoon would set in and no projects would begin before September, October or that time. Now what is the good thing? Budget is presented on 1st February, discussed throughout February, March, passed by mid-March, distribution allocation done by 1st April. All departments have the money, they can do their expenditure thereafter. So that is again something, you know, that is again something that helps better. All right, that is again something that helps better. So this is the basic ideal that we go by, and that is why what are the 4 advantages that comes of reframing the budget. ये जरूर अच्छे से याद कर लो.
ये मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के बॉक्सेस हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के, क्योंकि ये पॉलिसी ओरिएंटेड बॉक्सेस हैं। सो दिस यू शुड डू गुड इनफ।